अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राहील copier.pk के चैनल से आपको खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि रिको MPC 2554, 3054, 3554, 4054, 5054 और 6054 ये आलमोस्ट इनके फ्यूज़र यूनिट जो हैं आलमोस्ट सेम ही हैं। आज हम आपको इसका प्रेशर रोलर कैसे चेंज होता है इसके बारे में बताएंगे भी और प्रेशर रोलर चेंज करके आपको दिखाएंगे। जी दोस्तों, ये है इसका फ्यूज़र यूनिट। जिस मॉडल में हमें चेंज करना है उसका मॉडल 5054 है। आलमोस्ट 25 स्पीड से लेके 60 CPM तक इसका फ्यूज़र यूनिट सेम ही है। जी दोस्तों, हम जो इसका प्रेशर रोलर चेंज कर रहे हैं वो इस लाइन की वजह से कर रहे हैं। इस प्रेशर रोलर पर लाइन है, आप देख सकते हैं। हमने इसका ये प्रेशर रोलर रिप्लेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसका ये बॉटम कवर जो है ये ओपन किया है। अब इसका ये जो लोअर कवर है हम ये ओपन करेंगे। और 2 और 3 और ये डाउन पे 4, ये 4 स्क्रू इसके ओपन करेंगे। ये इसकी फ्यूज़र फिक्सिंग असेंबली कंप्लीट अलग कर लिया। आ जाते हैं इसके प्रेशर रोलर पे। एक लॉक ये लगा हुआ है और दूसरी साइड ये लॉक लगा हुआ है। इनको ओपन करेंगे।